And now, let's take you to the 217th annual Urs of Hazrat Qutubuddin Risaldar Shah Baba, a historic event that holds deep spiritual significance and embodies the essence of communal harmony. Now, this centuries-old tradition brings together people of different faiths, showcasing unity and brotherhood in a vibrant and peaceful way. Take a look. The capital city of Jharkhand, Ranchi, offers a perfect combination of natural beauty and cultural richness. And this beautiful city is best known for revered Sufi saint Hazrat Qutubuddin Risaldar Shah Baba. His holy shrine spreads peace and unites people from different communities. The shrine is a symbol of communal harmony, where people from different faiths come together to seek blessings and solace. यहाँ पे हिंदू और मुसलमान और इवन किसी भी अकीदा के, बल्कि यहाँ क्रिश्चियन भी बहुत अच्छी आबादी में हैं और यहाँ आते हैं। और इस जगह पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पे एक ही धर्म बचता है, वो सिर्फ इंसानियत का है। यहाँ न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है। इस जगह पे आने के बाद कांग्रेस पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के, कम्युनिस्ट के और बाहर में जो भी राजनीति करे, लेकिन इस हुदूद में, इस कैंपस में आने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ इंसान रह जाता है और आपसी सद्भाव का संदेश देता है। Each year, thousands of devotees from various backgrounds gather at this holy shrine to seek blessings and solace. During your celebrations, the air is filled with soulful Qawwali music that captivates the audience with its heartfelt devotional songs. ये बाबा रिसालदार का मज़ार है और वर्षों से, मैं जब पॉलिटिक्स में नहीं थी, मैं एक साहित्यकार थी और सामाजिक कार्यों में रहती थी, उस समय से हम यहाँ आते हैं माथा टेकने के लिए। और बाबा पर सभी जाति धर्म के लोग भरोसा विश्वास करते हैं और आते हैं। आप यहाँ अगर सुबह से शाम तक रहेंगे तो देखेंगे कि ऐसा कोई जाति धर्म का व्यक्ति नहीं है जो नहीं आता होगा। तो ये रांची में ये सांप्रदायिक सौहार्द का ये अद्भुत नमूना देखने को मिलता है। The shrine of Hazrat Qutubuddin Risaldar Shah Baba symbolizes communal harmony and spiritual unity. His teachings promote love, peace and coexistence, inspiring people of all ages. This revered Sufi saint's legacy unites diverse communities, fostering understanding and unity.